Those who want to reply, they will raise their hand and I will ask questions from them. चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज फाउंड इन Mediterranean forest. Three characteristics of trees found in Mediterranean forest. अनन्या सिंह बोलना है, रानी बोलोगे? बोलो रानी. Yes, ma'am. These Mediterranean forests, these forests are also known as the monsoonal forest because they are common in monsoon areas. Monsoonal forest, Mediterranean forest monsoonal कहलाता है. अच्छा आगे बढ़ो, सुनते हैं आप क्या बोलते हैं. बोलो आगे बोलो. बोलो. मे भी एक पॉइंट रॉन्ग बोले हो, बाकी हो सकता सही हो. क्या हुआ रोनी? चुप हो गया. विपाशा बोलो. मैम क्या नाम है? सूर्यांश. Yes, ma'am. यस मैम. विपाशा बोलो फिर सूर्यांश बोलना. बोलो विपाशा. मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा ना. The features of the trees of Mediterranean forest. Three features of the Mediterranean forest are the forest of the trees of these forests have spiny and waxy leaves. Second, the trees of these forests have thick bark, and the root of the trees are very long. Thus, they conserve moisture from the roots in the dry season. सूर्यांश बोलो. Trees of these forests are wide. Once more repeat करो तो सूर्यांश. हम डिस्कनेक्ट हो गए थे एक सेकंड के लिए. Trees of these forests are widely scattered and have spiny, waxy, small, and leathery textured leaves. Second point, they have long roots and thick bark. And third, due to the above feature, these trees are able to retain moisture in dry season. Example: barley, macu, Greek tortoise, etc. ओके सारिका आपका आंसर सही है. बोलो सारिका ने थर्ड में हैंड रेस किया था. बोलो सारिका. Yes, ma'am. The features of the trees of Mediterranean forest are they are widely scattered and have spiny, waxy, and leather textured leaves. They have long roots and thick bark. They are able to retain moisture in dry summer season. बहुत लोग के हाथ दिख रहे हैं. सारिका से के बाद ही अनन्या घोष का है. बोलो कि अनन्या घोष. Yes, ma'am. Features of the trees of Mediterranean forest are trees of this forest are widely scattered. They have spiny, waxy, small and leathery textured leaves. They also have long roots and thick bark. They are able to retain moisture in the dry summer season. ओके अच्छा. बहुत लोगों के हाथ दिख रहे हैं. अनन्या सिंह है, प्रिंस है. ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ. फिर आप लोग बोलिए. क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिरसा मूवमेंट. प्रिंस. Birsa movement
movement. Short notes on Birsa movement. हर्षवर्धन, शुभ, आदित्य राज, प्रिंस, साक्षी, इतने लोगों के हैंड रेज हैं. प्रिंस पहले बोलिए. Ma'am, Birsa Munda is a young boy, emerged as a prominent leader of a prominent hero of the tribals. He said to the farmers to work on their own land and make a profit. Cultivate their ma'am. Yes, ma'am. To continue to work on their own land, to earn their living, and as a Birsa Munda all over the. ठीक है, बोलो बोलो. Yes, ma'am. बोलो, आगे बोलो. हो गया. Is increased. प्रिंस यार नहीं होता, आन होता, आन. EARN, आर्न मीन्स कमाना. ओके, अच्छा, बहुत लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं. हर्षवर्धन बोलो. हर्षवर्धन. Yes, ma'am. In 1895, Birsa Munda, a young boy, emerged as a hero of tribals. As Birsa movement spread, the popularity of Birsa Munda also increased. He told people that land policies of British were destroying their traditional system. Birsa was jailed for 2 years, but on his release, the tribals attacked Jamindars. He raised the white flag as symbol of Birsa Raj. This movement ended in 1900 with the death of Birsa Munda. ओके, साक्षी बोलिए यही क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन चेंज करती हूँ. सार्थक, आपने सही लिखा, चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं. साक्षी बोलिए. पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो हैंड रेज की हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट, क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, फिर बोलना. साक्षी बोलो. साक्षी फिर आ गई, हैंड रेज तो की हुई हो, बोलो. In 1895, Birsa Munda, a young boy, emerged as a hero of tribals. He urged them to continue to work on their own land, to earn their living, and not to move away. This would end all their suffering. As the movement spread, the popularity of Birsa Munda also spread. He told his people that land policies of British were destroying their traditional land system. He was jailed for 2 years, but on his release, he instigated the tribals to attack Jamindars. He raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. This movement ended in the year 1900 with the death of Birsa. Write short notes on Chauri Chaura incident. Chauri Chaura incident. Shubh bolo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This movement took place in 1922 in Chauri Chaura. People had set a police station on fire in Chauri Chaura where 22 policemen were burnt alive. This movement became the cause of withdrawal of the non-cooperation movement. Mahatma Gandhi thought that this movement had lost its non-violent character. Very good, very good. I'm so happy with you. बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को बोला. प्रिंस भी बोलोगे, बोलो प्रिंस. Ma'am, Chauri Chaura in 1922 in Chauri Chaura in UP, the police yes, ma'am. The people burned the 22 policemen 22 policemen alive in police station in Chauri Chaura in UP. Gandhiji was shocked. This movement spread. This movement lost the glory of non-corporation movement. नहीं, lost the character of non-violence principle of Mahatma
non-violence principle of Mahatma Gandhi. So he called off the movement. ठीक है? चलिए. Write short notes on non-cooperation movement. पहले हैंड रेस कीजिए. आदित्य राज. Yes, ma'am. Non-cooperation movement. It was started by Gandhiji in 1920. It was started by Gandhiji in 1920. Gandhiji believed that it was a mass movement. Gandhiji believed that British rule has survived in India with the cooperation of Indian. If Indian will not cooperate, would not cooperate the British rule will collapse. It was a movement in which people were said to not to cooperate the British. The main features were boycott of British institution, education, boycott of foreign goods, boycott of titles given by British, boycott of legislative councils. Okay. You know that India is a sovereign, socialist, democratic republic. What do you mean by all these words? Explain. Sarthak. यस मैम बता रहे किसने कहा यस मैम बता रहे हैं? अंकित बोलो. सार्थक नहीं बोलोगे? किसने कहा यस मैम बता रहे हैं? Any other student? ऊपर साक्षी, प्रिंस, आदित्य राज, शुभ नारायण, विपाशा, हैंड्रेस किए हैं. इसके अलावा कोई और? अनन्या सिंह. कोई और नहीं बोलेगा? अच्छा ठीक है. मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अनन्या सिंह लिख रही है. वेरी गुड. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट secular and democratic republic. What do you mean by all these words? Explain. अनन्या ने एक लिखा और चलिए विपाशा बोलिए. India is a sovereign state because the country is free from any external control. India is a socialist country because in India no one is forced to believe on a particular religion. And India is a socialism state because every religion enjoy equal freedom. And India is a democratic. India has a democratic setup of government because our government is elected by the people directly or indirectly, by the both way. India is a republic country because the head of the state is the president, which is elected by the people of the India. That is the citizen of India. They are not by hereditary. Good. The remaining part. Ronit बोलोगे remaining part? Yes, ma'am. बोलो. India is a sovereign, socialist, and secular and democratic republic. India is a sovereign state because the country is free from all external controls. Internally, we are free to take our own decisions. India is a socialist state because socialism is one of the nation goal to be achieved. Thus, the India against exploitation in all the forms will try to establish economic justice.
Secular in state. India is a secular state. All religions enjoy equal freedom. No discrimination is made on the ground of reason. Democratic state. India is a democratic state. Our government is elected by the people and administration of the country is carried out by the elected representative of the people. Republic. India is a republic because the head of the state, i.e., our president Rashtrapati, is an elected head of among the people. Now, next question. Who can say the composition of Rajya Sabha? What is the composition? Same person, Aditya Raj and Vipasha, Shubh and Prince. कोई और बच्चा आ जाइए. गलत हो कोई बात नहीं. कहाँ गए सूर्यांश, सारिका, सुप्रिया? Composition of Rajya Sabha? सुप्रिया बोलोगी? Yes, ma'am. बोलो. Maximum strength of Rajya Sabha is 250 members. Yes. And 238 members are elected from the states, and 12 members are nominated by the president. Good. आगे बढ़ो. उस लाइन को एक लाइन और बढ़ा दो. नॉमिनेशन वाली लाइन को याद करो मैंने क्या बताया था. They are from Anglo-Indian. ना एंग्लो इंडियन तो लोकसभा. हीना गरबल वो तो दो लोग आए. May I say? हाँ बोलो. Yes, ma'am. In Rajya Sabha, 200. There are total of 250 members, out of which 238 members are from different states and union territories, and the remaining 12 members are nominated by the president. They are the people who excel in their fields of literature, sports, science, technology, etc. सारिका बोलो. Composition of Lok Sabha. Yes, ma'am. The total strength of Lok Sabha shall not exceed 552. 530 members are directly elected by the people from different states, and the remaining 20 are elected from union territories, and the rest 2 members are nominated by the president from the Anglo-Indian community. और कोई बोलेगा? बाकी कोई बच्चा? आस्था है, पीयूष है, मैम कहना है. सूर्यांश बोलो. सूर्यांश एक मिनट प्लीज, बाकी लोगों को मौका दे रहे हैं. सूर्यांश बोलो. The Rajya Sabha consists not more than 250 members. The members fall into two categories: nominated and elected. The nominated members are 12 in numbers. They are normally president from among persons having special knowledge or particularly experiences in matters such as these literature, science, art, and social service. ओके, बट सूर्यांश हम लोग अभी लोकसभा की बात कर रहे थे सर. राज्यसभा क्वेश्चन हो चुका था. कोई बात नहीं, आपने सही कहा. अच्छा, लोकसभा के कॉम्पोजिशन में हर्षवर्धन, सार्थक, अनन्या घोष. कोई बोलोगी? प्राची? Yes, ma'am. कोई नहीं. अनन्या घोष, प्राची, सार्थक. हाँ बोलो प्राची, बोलोगी? लोकसभा कॉम्पोजिशन अभी सारिका ने कहा. सुन के याद रखने की कोशिश करो. सुन के जो याद रहा सो उतना ही बोल दो. वही तो लिसनिंग एंड. हाँ बोलो. Composition of Lok Sabha. The maximum strength of the Lok Sabha shall not exceed 552, out of which 530 are directly elected by the people from different states, whereas the remaining 20 are elected from the union territories. The rest 2 members are directly nominated by the president from the Anglo-Indian community.
ठीक है, कोई भी लाइन पढ़ के नहीं बोलेगा, बुक बंद होना चाहिए। अभी 7th क्लास का इतना अच्छा रिवीजन हो रहा है, वे लोग कैमरा ऑन करके बोलते हैं और एक दूसरे का देख ही कर कह देते हैं कि उसकी आंखें नीचे थी मैम, वो पेज उलट रहा था, वो देख के बोल रहा था, वो सामने देख कर बोल रहा था। तो इस तरह से बिल्कुल ऑनेस्टली 7EF कर रहे हैं अपना रिवीजन। आप लोग भी ऑनेस्ट हो जाइए। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कम विथ मैंने कैमरा ऑन करके आप लोग मुझे फेस कीजिए। नो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो। ठीक है, आस्था के हाथ दिख रहे हैं, आस्था बताइए तो, आस्था बताइए तो। Yes, ma'am. The maximum strength of the Lok Sabha is 552. The 530 members are directly elected by the people from different states, and 2 members are elected are nominated by president from Anglo-Indian community, and the rest 20 members are elected from the union territories. Good. Achha, who can say some leaders, some moderate leaders, name of some moderate leaders? हैंड रेस देखेंगे, उसमें से मैं चूज करूंगी। मॉडरेट लीडर्स के नाम कौन बोल सकते हैं? विराट कश्यप, बोलिए विराट। यस मैम। मैम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता। वेरी गुड, वेरी गुड। सूर्यांश बोलो, सूर्यांश। MG राणे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। अच्छा, who gave this slogan do or die? ह्यूम का बोल सकते हैं मैम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को बोल सकते हैं। महात्मा गांधी मैम, महात्मा गांधी बोल सकते हैं। फॉर्मेशन सिर्फ की थी, उसके बाद आई थिंक रोल था या ना था, आई एम नॉट दैट मच कंफर्म। यू कैन सर्च इट। एक मिनट, अभी देख लेती हूँ, अभी देख लेती हूँ, आपके सामने ही देख लेती हूँ। हर बात हर एक को पता नहीं रहता है। Is Aung a moderate leader of Indian National Congress? नहीं, यहाँ पर भी लिखा हुआ he was the founder of Indian National Congress. ठीक है, फाउंडेशन, ठीक है, he was the founder. ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया। Write short notes on Kakori conspiracy case. क्या मैम? Short notes on Kakori conspiracy case. प्राची, मीना, लाभा, short notes on Kakori conspiracy case. मैम एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट क्लियर करो, उसके बाद जवाब दो, बोलो। मैम जो मैम इसी टॉपिक में मैम एक हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है मैम, वो फॉर्म्ड इन कानपुर लिखा हुआ है, बट मैम गूगल पे मैम फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली दे रहा है। ओ अच्छा, तुम दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो मैं सोची काकोरी कॉन्स्पिरेसी से कुछ पूछोगे। हाँ, अब सुनने, अब बोलो क्या बोल रहा है, क्या बोले तुम? मैम जो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मैम, पेज नंबर 165। तुम क्या कह रहे हो?
मैम लेकिन वो मैम अगर हम लोग गूगल पे सर्च करें तो मैम वो दे रहा है फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन। अच्छा, यस मैम। again I am saying कि that much not I confirm, okay, but इसमें से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से आपसे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेम सम रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द इंसिडेंट या फिर ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिसमें आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, फिर ये जो अंतर पार्टी वाला पॉइंट, लाहौर वाला पॉइंट, बॉम्ब वाज थ्रोन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब आपको 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे या फिर काकोरी इसमें शॉर्ट नोट्स। वहां वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक से अभी तक तो पूछा है नहीं, बट आप कहते हो तो नेक्स्ट डे आई विल मेक योर डाउट क्लियर, ओके। चलिए तब तक अभी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कौन कहेंगे? सूर्यांश, प्रिंस, साक्षी, ध्रुव, सब लोगों के हाथ, तो सूर्यांश से शुरू करते हैं। सूर्यांश बोलो। Yes, ma'am. The Kakori conspiration is a train robbery that took place between Lucknow and the Kakori on 9 August 1925. It was organized by Hindustan Republican Association, also known as HRA. HRA worked for the independence movement in India. It included members like Azad and Bhagat Singh. The Kakori conspiration was carried out by Dom Gopal Bismillah Khan, and since the party needed funds for the party activities, Bismil and other members planned train robbery. This plan was executed on 9 August 1925. Money and arms were looted. अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है और नेट ऑन करके नहीं बोल रहे हो? No, ma'am. Books. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्या कहते हैं, किस बुक से पढ़ते हो? कुछ कुछ और बुक भी रखे हुए हो? हाँ, अच्छा, भैया का बुक रखे हुए, अच्छी बात है। सूर्यांश, आप गलत सेंस में मत लीजिएगा, मुझे आपके आंसर कुछ डिफरेंट लगते हैं। पिछले सेशन में एक बच्चा था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो एनसीईआरटी की बुक से पीयूष नहीं, उसके पहले सेशन में, ये तो यही सेशन है, बीच में हम लोग ऑफलाइन हो गए थे, ये तो यही इसी साल का सेशन है, मैं पिछला सेशन कह रही हूँ, याद ही नहीं आ रहा नाम एकदम। बहुत उसके आंसर डिफरेंट होते थे, कुछ अलग अलग बात भी कहता था, तुरंत पूछती थी तो कहता था एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं कहती थी बहुत अच्छी बात है। पीयूष हो सकता है, बट मैं अभी पीयूष की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारे डिफरेंट थे, अच्छी बात है, अच्छा लगा है। अच्छा, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफर खान। yes Kushagra, yes Abdul Ghaffar Khan. Kushagra and Vipasha all are right। हाँ, अनन्या सिंह ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस लिख दिखाया, she is also right, very good। अच्छा, हम लोग एक बार पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट। अच्छा, हम लोग तो कोई चैप्टर दे नहीं रहे हैं, यूं ही कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। मंडे को हम लोग फिर किसी और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। इस बार मैं मिडिल ऑफ द चैप्टर से कुछ सेट करके लाऊंगी, कुछ टेक्निकल बातें, कुछ टेक्निकल टर्म, और फिर उसका जैसे कि कहाँ ज्वाइंटली होता है लोकसभा राज्यसभा, कहाँ से राज्यसभा, कुछ टेक्निकल बातें का कलेक्शन लेकर आऊंगी। पहले से ही नोट करके रखूंगी ताकि उस 40 मिनट्स में खोजना ना पड़े और तुरंत आपसे वो सवाल किए जाए और मैं देखूं कि आप कितना सही आपके नॉलेज है और कितना आपको याद है क्लास में जो भी पढ़ाई हुई। और कोई बात नहीं, भूलेंगे तो कोई बात नहीं, भूल हर एक से होती है। अच्छा, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस किसी ने अभी शायद सिर्फ सूर्यांश ने कहा है, कोई और अनन्या ने लिखी, अनन्या सिंह लिखी है, बोलो विपाशा।
The radical-minded Indians were upset with the non-cooperation movement, with the withdrawal of non-cooperation movement. So they decided to loot the government to collect cash for buying weapons. Many of them were arrested and tried in the Kakori conspiracy case. The Hindustani Socialist Republican Association was formed in Kanpur by Kanpur. ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। और रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की और एक्टिविटी प्रिंस बताओ। काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो गया है, उसके बाद बाकी 4 पॉइंट बता दीजिए। समझ रहे ना प्रिंस मैं क्या पूछ रही हूँ? रेवोल्यूशनरीज की, रेडिकल माइंडेड पीपल की बाकी एक्टिविटी। Yes, ma'am. The Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Sukhdev. Yes, ma'am. Sukhdev threw the bomb at a Central Legislative Assembly. In a Central Legislative Assembly, and उसका रिजल्ट बोलो। result was क्या हुआ? उन लोगों ने बॉम्ब फेंका जो, उसका परिणाम क्या हुआ? They were, ma'am, the people's were the death of the peoples. They were hanged to death. हाँ। 1930 में। तो जैसे तुम्हारे में है कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज को आदित्य संभाल दे। प्रिंस है कि थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बोलता है, वो हिंदी में समझता है ना प्रिंस? यही बात है ना आपके साथ? प्रिंस? यस मैम, कुछ वैसा भी है मैम। कुछ आप अपने मन से सोचते हैं। सारिका, आपके आंसर सही हैं, आपके आंसर सही है। सारिका ने मैसेज किया, ठीक है। हाँ, और बोलो, और जिसको जो पॉइंट याद आ रहा है फट से हम लोग शेयर कर लेते हैं। 2 पॉइंट हो सकता है। They assassinated the police commissioner standard who was responsible for the death of Lala Lajpat Rai. Yes. Hence they were executed. Very good. Should be right. Vipasha भी right. Prince भी right. किसी को याद हुआ सुनकर कोई पॉइंट? ये पहले ये क्वेश्चन चैप्टर के पीछे दिया हुआ था। फिर जो नई बुक आई उसमें ये क्वेश्चन शायद है नहीं, बट मिडिल ऑफ द चैप्टर से भी ये क्वेश्चन पूछता है। ये 5 मार्क्स से पूछता है, इसमें 5 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। बोलो, कोई और किसी को याद है? किसी ने अगर रटा, सुनकर अगर समझ आए तो 5 पॉइंट एक बार बोलिए। आप अगर 2 भी बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर रुक जाएंगे तो कोई दूसरा बोलेगा। बोलो, शुभ ने तो बोला ही 3 पॉइंट बोल, तुम तो बोल ही दिए शुभ। बाकी लोगों को पूछ रही हूँ। और किसी को सारिका तो लिख ही दी, और कोई? ये पढ़ लेना आप लोग, ये वाला रिवीजन। और जिस दिन जो बच्चे जिस क्वेश्चन को बोल नहीं पा रहे हैं उसको एक बार घर जाकर रिवाइज जरूर करेगा, ताकि उसे वो याद हो जाए। ठीक है।